హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు కరెంట్ టీవీ న్యూస్. మనమైతే న్యూఢిల్లీ వేదికగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ జరుపుతున్నటువంటి సమావేశంలో అయితే మనం ఉన్నాం. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమావేశం. జనసేన పార్టీ మొట్టమొదటిసారి దేశ చరిత్రలో ఒక సరికొత్త రాజకీయ వ్యవస్థకి నాంది పలికినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపించింది. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు జనసేన పార్టీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మాత్రమే చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే కాదు, కేరళలో కూడా జనసేన పార్టీకి సంబంధించి చాలా బలమైనటువంటి అడుగులు పడుతున్నాయి. దీనికి నిదర్శనమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి నాయకులందరూ కూడా కేరళకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అటు తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, అలాగే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి జనసేన నాయకులందరితో కూడా ఇక్కడికి ఆయన సమావేశం ఏర్పరచుకున్నారు. దాంట్లో కొంతమంది కేరళకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు అయితే ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగేటువంటి ఏర్పాటు చేద్దాం. సార్, ఆప్కా నామ్ సార్? दिलीप. सर, कैसा लग रहा है सर? जनसेना पार्टी एक मतलब आंध्र प्रदेश में डिप्यूटी सीएम है पवन कल्याण. अभी आप केरला से आया, केरला में जनसेना पार्टी को, पवन कल्याण को कैसा आप पहचानते? नहीं तो पहले से पता है आपको पवन कल्याण और जनसेना पार्टी? एक्चुअली क्या है कि हमारे जनसेना पार्टी को, हम पवन कल्याण सर को एक सुपरस्टार की तरह ही जानता है पहले हम. तो बाद में कि आंध्र प्रदेश के आंदोलन में सबका वो पार्टी आ गया था, तो उसी में 2019 में सर का पार्टी में लॉन्च हुआ था. उसी टाइम से हम जैसे उसका फॉलोअप कर रहे हैं, जनसेना पार्टी का फॉलोअप कर रहे हैं, उसका आइडियोलॉजी को हम फॉलोअप कर रहे हैं. ये फॉलो करने के बाद हमें पहचाना है कि जो भी डाइवर्सिटी है, क्योंकि कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी बॉर्डर्स नहीं है, तो सबको एक साथ ले जाने के लिए पवन सर का इतना बड़ा क्या कि मतदाता है, वो बहुत हमें पसंद आ गया. तो हमने सोचा कि हमारा लीडर्स जो है, ग्रेट लीडर्स है ना, हमने बात किया था. और अप्रैल 18 2026 को हमने केरला में हमने लॉन्च किया पार्टी का. तो हमारा पहला मीटिंग है जो हम सब इधर आ गया, तो ये हमारा पहला मीटिंग है. ये तो हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा वाला एक्सपीरियंस है इसका. कैसे लग रहा है सर पवन कल्याण का स्टैंडर्ड्स? मतलब एक प्रांतीय पार्टी है, अभी नेशनल पार्टी जैसा आपको इतना स्टेट्स में दिख रहा है. अभी आपको कैसा लग रहा है ये एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इतना दूर जाएगा और कुछ इसका प्रॉब्लम से कुछ आएगा? अभी क्या है कि द विजन ऑफ द पवन सर, विजन ये हैज़ अ वेरी मच विजन. लाइक जैसे हमने मीटिंग में सर ने कहा कि तो RS 100 ईयर्स होने वाला है, 100 ईयर्स उसका हो गया, तो हम भी इसी विजन में जा रहा है. अभी तो हमने बिगिनिंग किया है, तो 4 साल 5 साल ही हुआ है पार्टी का. तो हम क्या है कि पूरा एक जो भी है, जेंट्स का, नारी का, जो भी सपोर्ट वो कर रहा है, वो तो बड़ा वाला अप्रिशिएशन, क्योंकि वो क्या कि हम बोल सकते इज गिविंग इस एनर्जी टू दैट. So that it been attracted to every person, not only young people to the old people. तो जो भी है उसके साथ हम सर के साथ है. हम इसके आगे लेने के लिए 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए हम केला वाला भी उसके साथ जाने वाला है. सर, मैडम आपका नाम क्या है? बसी थॉमस. थॉमस मैडम, सर बोले तो मतलब पवन कल्याण सर बोले तो सनातनी है, वो जो एक हिंदू के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा बोल के कोई बात करेगा मतलब तेलंगाना में, नहीं तो आंध्रा में. आपका केरला में ऐसा ही देखते हैं, नहीं तो कुछ इंडिया का मतलब लीडर है ऐसा बोल के देखते हैं. आपका लैंग्वेज में പവൻ കല്യാൺജിയുടെ കോർ വാല്യൂസിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജനസേനയിലേക്ക് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളെയും സംസ്കാരത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ വളരെ വലുതാണ്. അതിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കണ്ണുനീര് മാത്രമല്ല തുടയ്ക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന കൂടി അകറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് സാധാരണ ശ്രമിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ മറന്നു പോവുകയാണ്, കോമൺ പീപ്പിളിനെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം സാധാരണക്കാരനെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക്. Local body consider here. I am attended the local body election as an independent candidate. That time we realized the problem of common people, and they are very fed up. So they don't know have the schemes of central government policies also. Nobody can give the right information, and they were very fed up of the political system
the two governments changing every time. And you feel how to feel you become a Janasena leader in your village or your city? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ശബ്ദമാകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കുമെന്നാണ്. സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഇന്ന് ആരും തന്നെ ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് വിഭിന്നമായി നിന്നുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരൻ വിഷമിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ പവൻജി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പല പദ്ധതികളെയും ആകൃഷ്ടയായിട്ടുണ്ട്. അതേ സംവിധാനം തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ജനസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പവൻജി ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. Feel proud Janasena become a... I am very proud of him. Thank you. आप राइट सर, आपका नाम सर? सुनील कुमार. सर कैसा लग रहा है सर यहाँ पर आके आपको देख रहे हैं पवन कल्याण जी का? പവൻ കല്യാൺജിയുടെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ളം, അതുപോലെ ഭക്ഷണം, താമസം, മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചെയ്യുന്നത്. Can you speak English, please? सर पवन कल्याण सर वो एक लीडर जैसा आप हैदराबाद में देखते हैं, नहीं तो एक सिनेमा स्टार है. अभी पॉलिटिकल कैंपेनिंग मतलब इतना देश का राजधानी में इतना रिलीजियस मतलब हिंदूस और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एवरीबडी इज एक प्लेटफॉर्म में. He is a capable leader of religions out of religions of the... Yes, my name is Ram Sagar. Actually, he is the capable of the South Indian leader. He's a very famous leader, and he can conduct all type of religious people, different type of people, especially the middle class family. Kerala is most of the middle class families there, but till now they are not getting any good facilities and everything, especially Adivasi tribal areas, scheduled caste and scheduled tribe and backward communities. They are not getting the right way, right path. But we have the space in Kerala Janasena party. So we will fight for against all corruption and for the backward communities and very poor families, most of them, all areas. So that is we are the aim, the first aim for going to conduct and the issues, the special point out the issues. So we will focus for the Janasena party for the all different type of sectors and different type of issues. We will focus on them. सर केरला पीपल हाउ टू फील जनसेना, आप जाके हम जनसेना का लीडर है बोले तो वो कैसा फील हो रहा है? എൻ്റെ പേര് പവിത്രൻ എന്നാണ്. ജനസേനയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാനുള്ള അവർക്ക് താല്പര്യം നല്ല കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജി കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും 14ഓളം ഇത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റികൾ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും വെറുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനസേന എന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ. ട്രസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ജനസേന ലീഡേഴ്സ്. യെസ് എവരിബഡി ഈസ് എ ട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കല്യാൺജി. അവരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഒരു ചെറിയ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിൽ കല്യാൺജിയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ട്രസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് everybody is know because of he is also actor also. That's why everybody know this is Kalyanji. सर आप बोलिए मतलब केरला का पीपल
पवन कल्याण जी को कैसा देखते, मतलब एक सिनेमा स्टार का जैसे देखते, एक अभी पॉलिटिकल में आया था, डिप्यूटी सीएम आया था, एक 10 इयर्स का जर्नी है उनका, वो कैसा, मतलब उसका पीपल क्या सोचते हैं पवन कल्याण का? तो अभी तो हम क्या है कि हम पार्टी का स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो अभी तो अब क्या है कि हमने इम्प्लीमेंट तो अभी 2 महीने ही हुआ है, 2 महीने पार्टी में है, तो अभी जनसेना पार्टी है, उसका लीडर जब पवन सर है, तो वही हमें तो मैसेज पास करना है। तो सबको जानता है कि पवन कल्याण इज ए लीडरशिप ऑफ जनसेना पार्टी, बट एवरी पीपल आर नाउ नोन एज द एक्टर, वो एक्टर की तरह अभी जानते हैं, पर मगर हमारा मैसेज तो उसके डीप में जाना है, डीप में जाकर उसका पूरा तो पूरा वो हमारा रिस्पॉन्स है। वी द लीडर्स आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट वन, सो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो क्या है कि ईश्वर की कृपा है तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले तो केरला में जनसेना का पार्टी का एक अच्छा सा भीड़ होगा, तो वही हमारा प्रतीक्षा है। आपको आप बुला था कल्याण सर को आप उधर आने के लिए? हमने तो क्या है कि हमने कल्याण सर को अभी नहीं बुला रहा है, बहुत स्टार्टिंग से बुला रहा था, लॉन्चिंग टाइम से हमें बुला रहा था, मगर सर का कि बिजी शेड्यूल हुआ था, उसका इसके बाद सर का एक सर्जरी सब हुआ था, तो इसके बीच में जो थोड़ा सा अभी भी हमने इन्वाइट, हमें और रसी और सर सब हमने मिलकर हमने उसको इन्वाइट किया है कि सर प्लीज़ कम टू केरला, वी पीपल नीड टू हैव सम मैसेज फ्रॉम मी। वही है हम बोलते हैं, जो मैसेज वो बोलते हैं ना, वो उसका एक क्या की बोलते हैं, पीपल विल अट्रैक्ट टू दैट वर्ड पीपल, मेनली टू द एक्सट्रीम ऑल्सो जनरेशन ऑफ जेंसी पीपल ऑल्सो। सर आपका नाम क्या है सर? Yeah, my name is Tom from Thrissur. When we approaching for joining in Janasena party, they asking one question: Why you in Janasena? That is the main question. We have a one answer. Why we are attracted in Janasena is mainly Pavanji. What they done in Andhra Pradesh, that's mainly he fulfilled the basic requirements. The basic requirements in poor, that below level poverty, more people is carrying. That level is fulfilled. Nobody is fulfilling that level of people, because that election time they come and taking the votes only, and after that they gone, and that people is alone after the election. But in case in Pavanji, they close with them, and they giving the basic requirements poor people, making roads, making water facility, electricity, and that basic levels all feel full. So we search about the done cases, what they done in Andhra Pradesh. We are searching in social media. They did good things. So as a politician, is a leader, leader, he is a right model. So we become the what means followers. So we expecting the same things happening in Kerala. There most people is need the help with poor people is the major main people in Kerala. They record the things. So in right time in Janasena, starting in Kerala, we can do something. Local body elections is contesting you? Are you any? ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് പവൻ കല്യാൺ. അദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് അതുമാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Sir, any future elections, local body elections or any conducting Janasena party, is there? Yeah, surely. Actually, we are conducting. Actually, we have 140 mandalams there. Actually, 140 mandalams there. We are absolutely we are contesting with. If we are aligned, actually we are Pavan sir is already aligned with the NDA only. So we'll be having a discussion with the NDA. According to their discussion only, we will be contesting also. But local bodies, if seats are also less, we'll be contesting with as a Janasena party. पवन कल्याण सर बोले तो मतलब एक प्रांतीय पार्टी का है, आंध्र प्रदेश है, एक आदमी ऐसा बोलता है, एक आदमी बोले तो वो सनातनी है,
इसलिए वो सनातनी वाले ही उसको सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई बोलता है। उधर नहीं तो उधर कैसे बोलेगा आदमी। एक्चुअली क्या है कि पहले तो हमें पहचाना है कि सनातनम मीन्स नॉट ए धर्म, इट्स नॉट रिलेटेड टू हिंदू और हिंदी इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। सनातन मीन्स इट्स ए कल्चर, so we are speaking to the people like a culture only, not a sanatana. So it obviously opposition parties or opposition leaders, they will create a something images, they will create a problems or something like that. But sadhana dharma means it's a culture only, not a dharma. It's not related to any Hindus or something like that. We have to protect our culture, like our grandfathers. We have to protect our culture only. We have to. India has a very big culture that we are protecting through जनसेना पार्टी। सर यहाँ पर मतलब फ्यूचर में आप कितना कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसंट्रेशन करेगा जनसेना पार्टी इन केरला स्टेट? केरला में हम पूरा केरला में हम देखते हैं, अभी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आप कितना कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था? 140 है। 140 कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, मतलब आप यहाँ पर आया ना, वो आप कितना कॉन्स्टिट्यूंसी से, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी? 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब अभी नेक्स्ट फ्यूचर में ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी तो फुल। हाँ, क्योंकि ना हमें तो क्या है कि हम तो क्या है कि हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए काम करने के लिए। हम तो सीधा हम क्या है कि लोगों के पास जाते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है वो तो हम सुझाने के लिए करते हैं। बाकी सब हमारा पार्टी को जो भी है ना वो सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब उसका बात है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर।